In the last session, we have seen this part, hypolipidemics. Hypolipidemic drugs, what do you mean by different lipoproteins? We have seen chylomicrons, remnantins, very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein, and high density and lipoprotein A. So out of that low density lipoprotein LDL, then very low density lipoprotein, then intermediate density lipoprotein. These are the increased level of these three IDL, VLDL, and LDL. They are associated with the arteriosclerosis, and they are known as a bad cholesterol. And this high density lipoprotein, they are known as a good cholesterol. We have seen it. Then we have also seen this arteriosclerosis. So there is a deposition of your cholesterol in the inner layer of coronary artery or inner layer of cerebral arteries, known as a plaque, known as arteriosclerotic plaque. So we have seen this due to that coronary artery or deposition of coronary artery, a plaque deposition in the coronary artery or arteriosclerosis of coronary artery, you may suffer from myocardial infarction, ischemic heart diseases. Right? We have seen this. So if that arteriosclerotic plaque is in the cerebral blood vessel, you may suffer from cerebral ischemia or you may suffer from stroke. We have seen this. We have also seen this lipoprotein, different type of lipoproteins and their composition. So you can easily see in the very low density lipoprotein, 15% cholesterol are there, and in the low density lipoprotein, 60% of cholesterol is there. So these two are very dangerous lipoproteins. So if these are increased in your body, so you may have complications. We have seen the different type of lipoproteinemia. If there is increase in the lipoprotein in your body, so that is known as a lipoproteinemia, hyperlipoproteinemia, and types of hyperlipoproteinemia we have seen. So type 1, type 2A, 2B, type 3, type 4, type 5. We have seen this drugs used in management or measures to be taken in case of hyperlipoproteinemia. We have seen the classification of drugs. Okay, we have seen this classification also. So today, yesterday this slide was not taken, so I am going to take this slide. So transport of lipids, or you can say movement of lipid or transport of lipid in the body. How lipids are transported in the body. So this part is important because if you don't know how there is a transport, how there is absorption of lipids in the body, you will not understand the mechanism of action. That's why I'm going to take this transport of lipids in the body. So you should know how there is transport. Triglycerides and cholesterol from the diet. So whatever you are eating, whatever food you are taking, so in that diet you will have triglycerides and cholesterol. So from the diet, triglycerides and cholesterol, they are transported in the body. They are absorbed in the body through a chylomicrons. So triglycerides and cholesterol, that is from dietary source, that is absorbed or transported in the body by chylomicrons, right? Whereas very low density lipoproteins transport endogenous triglycerides. Endogenous matlab kya hai? Endogenous matlab which is synthesized inside the body. So body also synthesizes some triglycerides. That is nothing but the triglycerides means esters esters of fatty acid with glycerol. Triglycerides you are getting from the diet as well as triglycerides your body your body also synthesizes triglycerides. So if body synthesizes the triglycerides, that is known as endogenous triglycerides, and whatever triglycerides you are getting from diet, that is known as exogenous. Very low density lipoprotein transports endogenous triglycerides from liver to blood. सो आफ्टर ऑल देखो यहाँ पे क्या है कि अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल ब्लड में ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में ज्यादा है तो फिर आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा. वो ब्लड से उसको निकलना है, तो ब्लड से निकलने के लिए जितने भी एफर्ट्स करना है वो कर सकते हो. ब्लड से देखो काइलोमैक्रोन्स का काम क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों जो डाइट से मिलेगा आपको वो उसको ट्रांसपोर्ट करना है कहाँ पे? ब्लड में. इसका रोल किसका है? काइलोमैक्रोन का. ना वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का रोल क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम द लिवर टू द ब्लड, मतलब ब्लड में लेके जाएगा ये भी ट्राइग्लिसराइड्स. एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का रोल अगर मतलब ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करता है ब्लड में. अभी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है दैट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड एंड वेरियस टिश्यूज
टू द लिवर, ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये बाद में बोलूंगा मैं आपको. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल and triglycerides from the diet to the blood, it is the role of chylomicron, and a very low density lipoprotein transport endogenous triglycerides to the liver, from the liver to the blood. Okay, now in the blood vessels, these triglycerides triglycerides of chylomicrons, they are metabolized by one enzyme known as a lipoprotein lipase. Okay, now lipoprotein lipase will metabolize the triglycerides of chylomicron. Okay, whatever chylomicron has transported triglycerides from the diet to the blood. So the triglycerides from the blood is metabolized by lipoprotein lipase. It is present in the serum. ये लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करेगा लिपोप्रोटीन्स को. कौन सा लिपोप्रोटीन को? जो काइलोमाइक्रॉन्स लेके आया है. काइलोमाइक्रॉन्स किसको लेके आता है? ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल को. कहाँ से? डाइट से ब्लड में लेके आए. तो उनको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? लिपोप्रोटीन लाइपेज. whatever fatty acids which are formed after the breaking of this triglycerides, तो ये lipoprotein lipase triglyceride को break down करेगा, and what will be released, because triglycerides they are nothing but the esters of fatty acid with glycerol. तो esterification होता है तो वो ब्रेक करेगा उसको, रिलीज क्या होगा? फैटी एसिड. so whatever fatty acid released, that is utilized by different tissues, adipose tissue, fat tissue and muscles. अगर आपके बॉडी में एनर्जी कम हो गया, so if there is a decreased glucose in your body, so what will happen? These fats or triglycerides, so they will be utilized by the different tissues for the synthesis of your glucose. तो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा किससे? ट्राइग्लिसराइड से. किससे होगा? ट्राइग्लिसराइड और फैटी टिश्यू. तो मसल्स आपके जो है they will utilize fats for synthesis of energy, synthesis of glucose. That is known as a gluconeogenesis. तो ये क्या होता है? Again, when we'll see the biochemistry, at that time I will explain what is meant by glycogenolysis, what is glucolysis, what is a glycolysis, what is a gluconeogenesis. Just remember, synthesis of glucose from non-carbohydrate precursor, that is known as a gluconeogenesis. तो ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल जो एब्सॉर्ब होता है आपके बॉडी में डाइट से, वो काइलोमाइक्रोन से एब्सॉर्ब होता है, एंड वो क्या करता है? उनको ब्लड में लेके जाता है. वैसे ही वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो जो एंडोजिनसली सिंथेसाइज्ड ट्राइग्लिसराइड्स होता है उसको ब्लड में लेके जाता है. अभी ये ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में वो मेटाबोलाइज होता है बाय द एंजाइम दिस लिपोप्रोटीन लाइपेज. तो लिपोप्रोटीन लाइपेज विल मेटाबोलाइज द फैटी एसिड्स triglycerides, and whatever metabolic product of triglycerides, that is a fatty acid, they are formed, that is utilized by tissues like fat or muscle. फैट में कैसे यूटिलाइज होगा? फैट जो एडिपोज टिश्यू है that will get all the fatty acids and deposit in the adipose tissue. Then muscles will utilize fat for the energy. Now remaining triglycerides, तो इसमें से जो बचा है remaining triglycerides, that is metabolized by hepatic lipase. So remaining triglycerides, that is metabolized by hepatic lipase. hepatic मतलब liver. So ये lipase जो है ये lipoprotein lipase वो तो ब्लड में होता है. अभी hepatic lipase मतलब क्या है? ये अगेन lipase मतलब breakdown of lipids. So hepatic lipase means origin of hepatic. Okay, so liver origin enzyme. So remaining triglycerides, they are metabolized by lipoprotein lipase and chylomicrons remnants. लास्ट में जो बचता है काइलोमाइक्रॉन रेमनटेंस. ट्राइग्लिसराइड का मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो बचता है उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन रेमनटेंस. नाउ इन दिस काइलोमाइक्रॉन रेमनटेंस only cholesterol is there. Now this cholesterol is taken up by the liver. It is used by the liver for the synthesis of steroids and bile acids. This result in the transportation of dietary cholesterol to the liver and free fatty acids for utilization. तो जो लिपोप्रोटीन लाइपेज होता है सीरम का, वो तो क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा लिपिड्स को. किसको? ट्राइग्लिसराइड को. कहाँ से आएगा वो? काइलोमाइक्रॉन से. काइलोमाइक्रॉन का काम क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल को एब्सॉर्ब करना डाइट में से और ब्लड में लेके जाना. वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम क्या है? दे ट्रांसपोर्ट एंडोजिनियसली सिंथेसाइज्ड ट्राइग्लिसराइड्स. मतलब बॉडी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस होगा वो उसको ब्लड में लेके जाएगा. और ब्लड में कौन है? लिपोप्रोटीन लाइपेज. ये क्या करेगा? उसको ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करेगा. फैटी एसिड जो बनेगा that is utilized by various tissues like muscle tissue and fat tissue. Now remaining triglyceride जो बाकी का बचा है वो that is metabolized by hepatic
एंजाइम हेपेटिक लाइपेज एंड काइलोमाइक्रोन रेमनेट्रंस, जो बाकी का काइलोमाइक्रोन जो बचा है जिसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है, so that is taken up by liver for the synthesis of bile acids and steroidal hormone. Now this result in the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल टू द लिवर, मतलब डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो वो कहाँ पे जाएगा, लिवर को, एंड फ्री फैटी एसिड जो है वो कहाँ पे जाएगा, मसल को जाएगा फॉर द यूटिलाइजेशन और फॉर द एडिपोज टिश्यू फॉर द डिपोजिशन, ठीक है। व्हेन ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन इन द लिवर इंक्रीजेस, लिवर में अगर ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन बढ़ गया, सो व्हेन ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन इन द लिवर इंक्रीजेस, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आर आल्सो सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड इन द ब्लड। जब ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन लिवर में बढ़ता है तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है और वो कहाँ पे रिलीज होता है, ब्लड में। नाउ ट्राइग्लिसराइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लिपोप्रोटीन लाइपेज एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है तो लिपोप्रोटीन लाइपेज उसको मेटाबोलाइज करेगा, लेकिन जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसका क्या होगा, सो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट density lipoprotein. So intermediate density lipoprotein. So in which triglyceride content and cholesterol ester content is same. मतलब intermediate density lipoprotein जो होता है उसमें triglycerides is equal to cholesterol होता है. Now intermediate density lipoprotein has either two fat. Now ये intermediate density lipoprotein जो बना है कहाँ से, very low density lipoprotein से। तो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन का दो तरीके से उसको मेटाबोलाइज होता है। So first, either it is converted into LDL. जो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो क्या, एक हाथ पे क्या होगा उसका, on the one hand it is converted into LDL by hepatic lipase. Okay. Now LDL only can stop a cholesterol esters, or it is taken up by the liver by the LDLR receptor. तो एक तो क्या होगा, जो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो बना है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से, तो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन अभी दो तरीके से यूज किया जाएगा। फर्स्ट क्या है कि उसका यूज क्या होगा कि ठीक है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कन्वर्जन होगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में, एक तो ये हुआ है, या फिर इट इज यूटिलाइज्ड बाय द लिवर, इट इज टेकन अप बाय द लिवर बाय यूजिंग LDLR रिसेप्टर। LDL ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू द वेरियस, LDL का काम क्या है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विल ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल, तो इसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल टू द वेरियस टिश्यूज और इट इज टेकन अप बाय लिवर। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसके नसीब में क्या होता है, उसके नसीब में दो ही चीजें। तो पहले कि LDL क्या करेगा, इट इज टेकन टू द टिश्यूज और प्लाज्मा, और इट इज टेकन अप बाय लिवर। एक तो उसको लिवर ले लेगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल है, लिवर क्या करेगा उसको यूटिलाइज करेगा एंड बाइल एसिड्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। अगर नहीं यूटिलाइज किया, जरूरत नहीं है लिवर को, तो क्या होगा, ये जो LDL है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपके वेरियस बॉडी टिश्यू में, वेरियस बॉडी टिश्यू मतलब प्लाज्मा में जाएगा, तो उसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल। अगर ये ज्यादा हो गया तो मतलब प्लाज्मा में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, यू विल सफर फ्रॉम आर्थरोस्क्लेरोसिस। नाउ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय टेकिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कब सिंथेसाइज होता है, नाउ जो कोलेस्ट्रॉल टिश्यू में है मतलब प्लाज्मा में है या बाकी टिश्यू में, दैट इज टेकन अप बाय लिवर एंड लिवर सिंथेसाइज द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मतलब ये क्या है कि रिवर्स ट्रांसपोर्ट है। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, तो लीवर से लेके कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ले जाके रख देता है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है कि ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लीवर में लाता है। HDL इज नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, क्यों, क्योंकि इट मोबिलाइजेस द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू और प्लाज्मा टू द लिवर, and it is known as a bad cholesterol. Q, because this mobilizes the cholesterol from liver to the plasma. So that's why high density protein is synthesized by taking up the cholesterol from tissue and helps to transport the cholesterol to the liver. So that is known as a reverse transport. And that's why this HDL is known as a good cholesterol and LDL is known as a bad cholesterol. Is that clear? समझ लगा है? Now after that we have seen these statins. We have seen the statins, individual drugs. So first line drugs are nothing but the statins, cholestyramine and ezetimibe. So we have seen this, they are known as a first line drug in the hyperlipoproteinemia. अगर lipoprotein level ज़्यादा हो गया तो पहले ये drug use करना है, they are known as first line. Now fabric acid derivative niacin, they are known as second line drug. We have seen the statins. So what is the mechanism?
they inhibit the de novo synthesis of cholesterol from the liver by inhibiting the HMG CoA reductase enzyme. So we have seen this. Then ये पूरा देखा है. Now against you just remember pleiotropic properties or pleiotropic effect of statins. मतलब statins का main role क्या है? To inhibit the HMG CoA reductase and to prevent the synthesis of cholesterol in the liver. Okay, but along with this property, your statins also has some additional pharmacological effect like antioxidant, anti-inflammatory, and anti-proliferative property. Okay, so these three effects they are known as a pleiotropic effect of statins. Examples देखें अपने, there are a lot of atorvastatin, pitavastatin, rosuvastatin, lovastatin. There are a lot of statins. So out of that, pitavastatin is the most potent, followed by rosuvastatin. ये दो ड्रग जो है वो पोटेंट होते हैं, वो कम कम डोज में भी HMG को रिडक्टेस को इनहिबिट करते हैं. दिस लोवास्टैटिन्स दे आर द लीस्ट पोटेंट, ये सबसे कम पोटेंसी होता है. अटोवास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन दे आर द लॉन्गर एक्टिंग ड्रग. जो प्रोवास्टैटिन होता है उसमें लैक्टोन रिंग होता है. अटोवास्टैटिन एंड सिमवास्टैटिन दे आर यूज्ड एज अ प्रोड्रग्स. अटोवास्टैटिन सिमवास्टैटिन क्या है? प्रोड्रग्स है. Sorry, they are mostly used drug for hyperlipidemia. Atorvastatin, simvastatin, they are most commonly used drug for the treatment of hyperlipidemia. Lovastatin and simvastatin, they are the prodrugs. We have seen this yesterday. We have seen. Okay, so I will explain the mechanism again. Okay, what is the mechanism of HMG CoA reductase inhibitor, or what is the mechanism of statins? एक critical enzyme for cholesterol synthesis. कौन सा एंजाइम होता है? HMG CoA reductase. So hydroxymethyl CoA reductase, HMG CoA reductase. That is a critical enzyme for cholesterol synthesis in the liver. That is a de novo synthesis or that is endogenous synthesis. आपके बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करती है. क्यों? क्योंकि उसको स्टेरॉइड बनाने के लिए लग रहा है, उसके लिए उसको बाइल एसिड बनाने के लिए लग रहा है, क्योंकि डाइट से नहीं मिल रहा है. तो कोलेस्ट्रॉल भी लगता है अपने को. ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं कि जो लगती नहीं, सब लगता है. लेकिन अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे, उसका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे, सो दैट विल बी डेफिनेटली हार्मफुल. जैसे होता है अल्कोहल, हर एक चीज जो है बॉडी में बनता है. आप बोलेंगे सर मैंने कभी जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आपके बॉडी में जो बनता है उसका क्या भाई? आप बोलते नहीं मैं बचपन से ही फकीर हूँ, बचपन से ही मैं मतलब ये सब इसको हाथ नहीं लगाता, मैं कभी मैंने शराब की बूंद भी नहीं. तेरे बॉडी में शराब बनती है ना बॉस. सो दैट इज नोन एज एंडोजिनस अल्कोहल. तो आपके बॉडी में जो अल्कोहल सिंथेसिस होता है उसका क्या है? वो तो बॉडी में है ना. तो दैट इज नोन एज एंडोजिनस सिंथेसिस. So there are a lot of things, there are a lot of chemicals which are synthesized in the body, not only provided in diet. ऐसा नहीं कि सिर्फ डाइट से ही मिलता है, कुछ चीजें आपके बॉडी में भी बनती है. So that is known as a de novo synthesis. That is known as a endogenous synthesis. Okay. So these HMG CoA reductase inhibitor, what they will do? So they will inhibit this enzyme, which is a critical enzyme in the synthesis of cholesterol. HMG CoA. Okay. HMG CoA reductase. That enzyme is inhibited by this statins. Now it is a critical enzyme for cholesterol synthesis. Now all the statins, vastatins means statins like atorvastatin, lovastatin, parvastatin, simvastatin. So that's why vastatin. They inhibit the HMG CoA reductase, and therefore there is a reduction of endogenous cholesterol synthesis. Endogenous cholesterol synthesis is more important than food source. So that's why there is a decrease in the cholesterol level by the statins. That is mechanism. Now second, they increases the LDL receptor in the liver. वो क्या करेंगे? लिवर में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का अपटेक बढ़ाएंगे. So they increases the uptake of low density lipoprotein in the liver. They increases the LDL receptor in the liver. Therefore vigorous uptake of LDL from the plasma. जो ब्लड में आपके LDL है, LDL में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल. That is moved to the blood. Sorry, from blood to it is moved to the liver and fall in the LDL concentration in the plasma. Plasma में low density lipoprotein क्या होगा? कम होगा. Obviously that is useful. After that metabolism. Okay, after that metabolism and removal of LDL from cholesterol. LDL cholesterol. तो होता क्या है कि statins they exert two type of action. जो statins है तो पहले तो वो क्या करेंगे? They will prevent the de novo synthesis of
cholesterol by blocking this enzyme. HMG CoA reductase, okay, blocking this enzyme. So they will prevent the endogenous synthesis of cholesterol. Again, second, they will increase the LDL receptor, low density lipoprotein receptor on the liver surface. So what will that do? So it causes the more uptake. Liver क्या करेगा? जो प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बुला लेगा, चलो आ जाओ, आपका बारी आ गया. So lipoprotein will be taken up, vigorous uptake of lipoprotein, that is a low density lipid. Then there is a decrease in the lipoprotein of there is a decrease in the low density lipoprotein from the plasma or blood. So and that is utilized for the metabolism and remove LDL cholesterol by the liver. So that's how they increase. But that's how these are the action. And also they increases the, ये तो डिक्रीज करेंगे, एलडीएल को डिक्रीज करते हैं, बट दे आल्सो इंक्रीज द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. Yes. So they also increases the high density lipoprotein. So increases the HCl. Okay. Now we'll see. Then we have seen the adverse effect also, but again, so you just have to remember two major adverse effects. What are the two major adverse effects of your statins? So these two, myopathy and hepatotoxicity, because they increases the one enzyme in the liver known as aminotransferase. Then rhabdomyolysis is there. Then they rarely can cause impotence in the male, gynecomastia, memory loss, insomnia. Memory loss, insomnia. Insomnia means loss of sleep. अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उसको बोलेंगे इंसोम्निया, है ना. गाना है ना, नींद नहीं आती है रातों में, ये तो केम छे प्रेम छे, ये कुछ नहीं है. इट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग. देन मूड चेंजेस, जो प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है, मूड चेंजेस. जो लेडीज है, कभी खुश होंगी, कभी डिप्रेस होंगी, कभी गुस्सा होंगी, आप बोल नहीं सकते. देन डिप्रेशन. So these drugs are contraindicated in the pregnancy, children and patient with the liver disease. तो आपको इसमें यूज नहीं करना है. Now, what is the use of this drug? They are the first line drug for treatment of type 2A 2B hyperlipoproteinemia and secondary lipoproteinemia. They are used for the prophylaxis. Prophylaxis मतलब क्या है? Prophylaxis मतलब प्रिवेंशन. क्या होता है prophylaxis? मतलब प्रिवेंशन. जिससे होता है ना आपका, अभी देखो कोरोना का जो पीरियड चल रहा था उसमें ड्रग्स यूज कर दिए. रेमडेसिविर. कौन सा? रेमडेसिविर. रेमडेसिविर क्यों यूज करते हैं? सो इट डिक्रीजेस द वायरल लोड. सो इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट. रेमडेसिविर क्या है? ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, रेमडेसिविर. अभी कोरोना का वैक्सीन जो है, दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन. ये प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है. क्यों? अगर एक बार वैक्सीन ले लिया आपने, एक बार वैक्सीन ले लिया तो आपको कोरोना नहीं होगा, है ना. So that is the prevention, and remdesivir was used for the treatment. ये तो ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे. सो प्रोफिलैक्सिस मींस प्रिवेंशन. प्रोफिलैक्सिस मतलब क्या है? अगर कहाँ पे भी टर्म आता है, सो इट इज यूज्ड फॉर प्रोफिलैक्सिस. प्रोफिलैक्सिस मींस इट इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन. सो दिस statins, they are used for the prevention of myocardial infarction, ischemic heart disease, diabetes mellitus, and familial hypercholesterolemia. फैमिलियल हाइपरकोलेस्टोनिमिया मतलब क्या? अगर जेनेटिकली उस फैमिली में सबको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे? फैमिलियल हाइपरकोलेस्टोनिमिया. Okay, so that is the use. Now we'll see the another drugs. So there are another drug like Google lipids. Google ये क्या है? It is a drug obtained from natural source. It is a drug obtained from one plant. Okay, so it is a steroidal fraction of one plant known as a commiphora. Steroidal fraction of drug. It is a steroidal fraction obtained from the one plant known as a commiphora mormon, and it is available in the form of tablet, 25 milligram tablet. Now it is a drug which is developed by CDRI. It is a hypolipidemic drug developed by CDRI, Central Drug Research Institute, Lucknow. CDRI, drug developed by Central Drug Research Institute, CDRI, Lucknow. Now it decreases moderately. ये कुछ मीडियम अमाउंट में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. क्या? इट डिक्रीजेस लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. decreases the low density lipoprotein in a moderate amount and also slightly increases the high density lipoprotein. LDL को कम करेगा मीडियम अमाउंट में और HDL को बढ़ाएगा. ठीक है, इसको कम करेगा. और नेक्स्ट वन इज फाइबर्स मतलब क्या? सोल्यूबल फाइबर्स. सो जितने भी प्लांट्स में फाइबर्स आते हैं, सोल्यूबल फाइबर्स लाइक पेक्टिन
पेक्टिन कहाँ से आता है? पेक्टिन इज नथिंग बट द फाइबर प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट। आप जो मौसम्बी खाते हो, संतरा खाते हो, उसका जो छिलका होता है उससे एक फाइबर निकलता है, दैट इज नोन एज पेक्टिन। एंड पेक्टिन देन म्यूसिलेज फ्रॉम सिलियम, मतलब ये इसबगुल जो होता है उसका जो म्यूसिलेज होता है दैट इज आल्सो यूज्ड। देन म्यूसिलेज फ्रॉम गम इन द and oat products. Then beans, they also moderately decreases the serum cholesterol. There is one drug known as a Probucol. Probucol. So Probucol is nothing but the antioxidant drug. Okay? Probucol is an antioxidant drug and it inhibits the oxidation of low density lipoprotein. It inhibits the oxidation of low density lipoprotein. ये ऑक्सीडेशन इनहिबिट करेगा इसका, तो क्या होगा? इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल रिलीज नहीं होगा, इन विच द लेवल ऑफ okay, so it is antioxidant inhibit the oxidation of low density protein and increases the level of decreases the level of both LDL as well as HDL. तो ये दोनों का ये लेवल कम कर देगा, decreases, यहाँ पे decreases the level of both LDL and HDL. Now these are the little bit important term. ये थोड़ा ज़्यादा important नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। Obviously ये प्रोबुकॉल जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। It is an antioxidant. It will decrease the oxidation or metabolism of the low density lipoprotein and also decreases the level of LDL as well as HDL. ये इसके ऊपर आ सकता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, identify the drug developed by CDRI, that is Central Research Institute Lucknow, for the treatment of hyperlipidemia. So that is a Google lip or Google lipids. ये क्या होता है? It is a gum. It is a gum. गम मतलब क्या है? गम मतलब खुशी वाला गम नहीं, ये गम अलग है। ये गम मतलब डिंक, मराठी में तो डिंक मतलब चिपकाने के लिए यूज करते हैं गम, तो वो गम रहता है। तो वो रोने वाला गम अलग है, ठीक है। सो गूगल लिपिड्स मींस दैट इज डेवलप्ड बाय CDRI. इट इज नथिंग बट द स्टेरॉइडल फ्रैक्शन ऑफ कोमिफोरा molecule and available as a 25 mg tablet. Now another important drug is nothing but the ezetimibe, ezetimibe or ezetimibe. It is a prodrug of, okay, it is a prodrug. ये क्या है? प्रोड्रग है। मतलब प्रोड्रग मतलब क्या होता है? Prodrugs are the drugs which are inactive. ये as such it is inactive and when it is given it will be metabolized in the body. ये metabolism होगा उसका body में and then it will release a active drug. It is a prodrug. Chemically it is 2-azetidione and it is converted into one active metabolite after metabolism in the intestine. That is nothing but the ezetimibe glucuronide. So this ezetimibe glucuronide is active, and now what it will do? It binds with the intestinal mucosal transport of cholesterol, and inhibit the absorption of cholesterol. जो transport protein होता है, the protein which is responsible for the absorption of cholesterol, so ये उसको bind करता है and उसको inhibit करता है. So this ezetimibe binds to the transport system or protein responsible for the active transport of this cholesterol and inhibit the transport of cholesterol, inhibit the absorption of the cholesterol, both dietary as well as biliary cholesterol from the intestine. This result in the more uptake. अभी कोलेस्ट्रॉल एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में, तो क्या होगा कि बॉडी को लिवर के लिए जो कोलेस्ट्रॉल लगेगा वो कहाँ से लाएगा फिर? तो लिवर विल कॉल लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अगर एब्सॉर्प्शन आपने रोक दिया कोलेस्ट्रॉल का, बॉडी के लिए तो लग रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो कहाँ से आएगा? जो ऑलरेडी है बॉडी में उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ऑलरेडी कहाँ पे है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो उसको बुलाएगा कौन? लिवर, और वहां से उसको मोबिलाइज करके फिर कोलेस्ट्रॉल को यूटिलाइज करेगा। दैट्स हाउ इट डिक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल को एब्सॉर्प्शन नहीं होने, ठीक है। इट विल बाइंड टू ए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ cholesterol, and because of the prevention of absorption, so what will happen? So liver will call low density lipoprotein for the utilization of your cholesterol. Now what are the adverse effects of this drug? Fatigue, then dizziness means general feeling of non well, okay? Then headache, abdominal discomfort, diarrhea, arthralgia मतलब क्या? Bone pain, hypersensitivity, आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन होगी। So it is avoided in the pregnancy. It should be avoided in the pregnancy and lactation and children. ये प्रेग्नेंट वुमन में, बच्चों में देना नहीं। What is the dose? 5 to 10 milligram per day as a monotherapy. It is used as a monotherapy. ये
अकेला ये ड्रग यूज करेंगे या फिर also it is given with the statins. Now along with the statin it will act by synergistically. ये statin के साथ में भी इसको combine करते हैं to increase the more effect and it is also given by monotherapy. अकेले भी यूज करेंगे इसको. Now next drug is nothing but the bile sequestering agents and that is nothing but the cholestyramine. Okay, so what will it do? Mechanism of action. So cholestyramine क्या है? It is a chloride salt of basic anion exchange resin. ये जो है it is a one of the anion exchange resin and it binds to the bile acid and forms insoluble complexes. Okay, it binds with the bile acid. So मैंने बोला है कि आपका लिपिड जो है जो खाते हो आप ठूस ठूस के वो एब्सॉर्ब कैसे होता है, क्योंकि उसके एब्सॉर्प्शन के लिए आपके जो गॉल ब्लैडर है उसमें बाइल एसिड स्टोर किया जाता है. जब भी आप खाना खाते हो तो आपके इंटेस्टाइन में डिओडेनम में वो बाइल एसिड रिलीज किया जाता है. वो बाइल एसिड जो लिपिड कंटेंट है आपके खाने में उसके साथ में कंबाइन होकर इमल्सिफाई करता है एंड दैट इज absorbed through the lymphatic system and in the blood. So this cholestyramine is a resin known as a basic anion exchange resin. So it binds with the cholic acid, it binds with the bile acid and forms insoluble complexes which is excreted in the feces. आप जब सुबह सुबह मॉर्निंग में बाथरूम में जाके जो करते हो उसमें वो निकल जाएगा. So it prevent the absorption of exogenously administered cholesterol. ये बेसिकली क्या करता है? So basically these cholestyramine resins and another drugs like drugs, for example cholestyramine, then this drug cholecalciferol. Three drugs, they are known as a bile sequestration. So they inhibit the absorption and they prevent the absorption of exogenous cholesterol and increases the metabolism of endogenous cholesterol. तो ये क्या करेंगे, जो खाने में का कोलेस्ट्रॉल है आप खा रहे हो उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होने देंगे और जो ऑलरेडी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है तो उसका मेटाबॉलिज्म क्या करेंगे. सो इट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल एंड प्रिवेंट द एब्सॉर्प्शन ऑफ एक्सोजेनस कोलेस्ट्रॉल. इन रिस्पॉन्स टू दैट लिवर क्या करेगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बुलाया. चलो लिवर बोलेगा कोलेस्ट्रॉल नहीं आ रहा है तो मैं आपको खा लूंगा, तो उनको खा लेता है. डोज कितना होना चाहिए इसका? डोज होता है 12 to 24 grams per day. And what are the adverse reactions? Nausea, vomiting, heartburn, constipation. एक मेजर एडवर्स इफेक्ट इनका यही होता है, कॉन्स्टिपेशन. यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ बाइल सीक्वेस्ट्रेंट. मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है? दे कॉजेज कॉन्स्टिपेशन. आप बोलेंगे सर कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन अगर आपको मालूम नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, चलो मैं बोलता हूँ. कॉन्स्टिपेशन मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू पास योर स्टूल्स, अगर आपको टट्टी नहीं हो रही, बाथरूम में जाके हो ही नहीं रहा, उसको बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन. तर मग ती ऍडव्हर्टाइजमेंट येते बघा, कुठली धोती एक चूर्ण रात्री घ्या, संध्याकाळी 2 चमचे घ्या, सकाळी ओके. कॉन्स्टिपेशनसाठी. and also interfere with the absorption of fat soluble vitamins and lipid soluble drugs like thyroid hormones, tetracyclines, etc. now another drugs known as a कोलेस्टिपॉल जो है वो सैचेट में आता है. क्या है? सैचेट में आता है. कोलेसिविलम एक टैबलेट फॉर्म में आता है. सिमिलर ड्रग्स लाइक कोलेस्ट्रामाइन. अभी ये कोलेस्ट्रामाइन जो है तो दैट इज अवेलेबल इन द सैचेट. कोलेस्ट्रामाइन जो है इट इज अवेलेबल इन द सैचेट. so it is mixed with the water and kept for some time to increase the palatability. ठीक है, इसके ऊपर बस इतने ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया आपको तो कैसे आएगा? वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बाइल सीक्वेस्ट्रेंट or following drugs inhibit the absorption of cholesterol: cholestyramine, then cholestyramine, cholecyvalin. These are the three drugs. So what is the mechanism against? You can say cholestyramine. Okay, cholestyramine it will combine with the bile acid. cholestyramine क्या करेगा? bile acid के साथ में intestine में combine होगा and cholestyramine क्या करता है? cholestyramine bile acid complex. So that decreases the enterohepatic circulation of bile acid, increases the conversion of cholesterol to bile acid in the hepatocyte. तो ये यहाँ से तो absorption नहीं होने देगा उसका, यहाँ से absorption नहीं होने देगा. By binding with the bile acids, it will prevent the absorption of cholesterol. Second thing, it will increase the metabolism of cholesterol. So increases the conversion of cholesterol to bile acid in the hepatocyte and decreases the intracellular cholesterol concentration.
increases the uptake of low density lipoprotein in the liver cell, decreases the plasma cholesterol concentration. That's how this cholestyramine will act. Cholestyramine and related drugs. Now next one is a fibric acid derivative, or they are known as a fibrates. Fibric acid derivative, and they are also known as isobutyric acid derivative. क्योंकि fibric acid itself is a isobutyric acid. What are the different drugs like gemfibrozil, then benzofibrate, फेनोफिब्रेट एंड क्लोफिब्रेट. ठीक है, ये ड्रग्स आते हैं इसमें, gemfibrozil, फेनोफिब्रेट, क्लोफिब्रेट, benzofibrate. So out of that क्लोफिब्रेट is not more used, no more used. तो अभी कौन सी यूज करते हैं, gemfibrozil. So it is used in the 300 to 600 milligram capsule versus benzofibrate 200 milligram tablet is available. फेनोफिब्रेट, ठीक है, फेनोफिब्रेट का 50 mg to 200 mg कैप्सूल आता है. They are used. Clofibrit is no more used because it has a adverse reaction like malignancies and post cholecystectomy complication. मतलब गॉल ब्लैडर का अगर ऑपरेशन हो गया तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करता है. So it is no more used. Only gemfibrozil, benzofibrate and phenofibrate are used. Right? What is the mechanism of action? इसका mechanism क्या होगा, ये कैसे एक्ट करेंगे? Okay? So they act by activating one enzyme known as lipoprotein lipase. ये क्या करेंगे, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट कर देंगे, तो उसका एंजाइम का काम क्या होता है, टू ब्रेक डाउन द लिपोप्रोटीन्स. सो दे विल एक्ट बाय एक्टिवेटिंग द लिपोप्रोटीन लाइपेज, एंड लिपोप्रोटीन एक्टिवेशन दे आर डूइंग बाय एक्टिवेटिंग वन न्यूक्लियर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है. सो when we'll see the general pharmacology, in that when we'll see pharmacodynamics, at that time I will explain you डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर क्या है, चैनल क्या होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है, एंजाइम रिसेप्टर क्या होता है, उसके बाद में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या होता है, और न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या होता है. सो दे एक्ट बाय एक्टिवेटिंग लिपोप्रोटीन लाइपेज बाय एक्टिवेटिंग ए न्यूक्लियर रिसेप्टर नोन एज PPAR alpha, known as a peroxisome proliferator activated receptor alpha. Now what this will do, it controls the gene expression which mediate the metabolism of triglyceride. So activation of this receptor, peroxisomal proliferator activated alpha receptor. So it increases, it controls the gene expression. मतलब ये क्या करेगा, gene expression मतलब उसका amount बढ़ देगा. So total amount of lipoprotein lipase will be increased, which metabolizes the triglyceride. These drugs causes increase in the lipoprotein lipase activity and causes the hydrolysis of triglycerides. इसका triglyceride. That's why they are used in the condition where there is increased triglycerides. वो सिर्फ टाइप 3 लिपोप्रोटीनेमिया में ही यूज करते हैं. Also they increases the production of high density lipoprotein and inhibit the incorporation of, मतलब inhibit the fixation of fatty acid in the very low density lipoprotein. Therefore they act by inhibiting the synthesis and secretion. So decrease in the triglyceride level up to 50%. Then cholesterol 10 to 15%, increases the high density lipoprotein by 20%. 50% ट्राइग्लिसराइड वो क्या करेंगे, बॉडी का डिक्रीज कर देंगे. कोलेस्ट्रॉल भी 10 to 15% क्या करेंगे, 10 to 15% डिक्रीज कर देंगे, एंड इंक्रीजेस द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. सो दे आर यूज्ड इन द टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरलिपिडेमिया जो होता है. दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस. क्या है वो, ड्रग ऑफ चॉइस. इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. mechanism and drug of choice. Drug of choice in the type 3 type 4 hyperlipoproteinemia or hypertriglyceridemia. Triglyceride मतलब increased triglyceride level of the body. So they are the drug of choice, याद रखो. And they inhibit the, they activate the, ये तीन चीजें याद रखो. They activate this enzyme, peroxisomal proliferator activated receptor alpha, and increases the lipoprotein lipase activity, causes the hydrolysis. यहाँ पे आपको मैकेनिज्म में ये तीन चीजें याद रखना. Increases the lipoprotein lipase activity and causes the hydrolysis of triglycerides and decreases the triglyceride level by 50%. Increases the decreases the cholesterol level by 10 to 15% and increases the high density lipoprotein by 20%. Now you just get drug of choice in the type 3, type 4 hypertriglyceridemia. Now phenofibrate is a prodrug and it is the longest acting amongst the fibrate.
Fibrates क्या है, प्रो ड्रग है and it is the longest acting. It causes a maximum increase in maximum maximum decrease in the LDL level. It is also uricosodic in nature. Are you getting? समझ रहा है आपको? समझ तो आएगा. अदर ड्रग्स में आएगा फिश ऑयल. तो फिश ऑयल जो होता है साल्मन फिश या फिर आपका वेल मच्छी का फिश लिवर ऑयल में, उसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड दिस कॉजेस दे डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंड इंक्रीजेस द क्लियरेंस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. ये क्या करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन कम करते हैं एंड उसका रिमूवल इंक्रीज करते हैं. Now next drug is a nicotinic acid. Next drug is a nicotinic acid is known as a vitamin B3. It is a water soluble vitamin. So इसके बारे में डिटेल में अपन जब बायोकेमिस्ट्री में विटामिन देखेंगे तो इन दैट पार्ट विटामिन ए बी वगैरह सब उसकी डिटेल में देखेंगे. बट यहाँ पे nicotinic acid is known as a vitamin B3. It decreases the lipoprotein. It decreases the low density lipoprotein. कैसे? It decreases the low density lipoprotein, very low density lipoprotein and cholesterol. So vitamin B3 decreases the low density lipoprotein, very low density lipoprotein and cholesterol. It increases the high density lipoprotein. It acts by inhibiting the hormone sensitive lipolysis in the adipose tissue. कैसे एक्ट होता है? By inhibiting the hormone sensitive lipolysis. मतलब सिंपली lipolysis inhibit करने वाला है. So it prevents the breakdown of lipids by inhibiting the adenyl cyclase in the, जो होता है लिपोलाइसिस कैसे होता है? बाय एक्टिवेशन ऑफ एडेनिल साइक्लेज एंड देयर इज अ लिपोलाइसिस. बट इट इनहिबिट द हार्मोन सेंसिटिव लिपोलाइसिस इन द एडिपोज टिश्यू बाय इनहिबिटिंग द एडेनिल साइक्लेज. क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे आता है कि व्हिच ड्रग विल इनहिबिट द लिपोलाइसिस, व्हिच ड्रग और व्हिच हाइपोलिपिडेमिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द लिपोलाइसिस ऑफ लिपिड्स. सो दैट इज अ निकोटिनिक एसिड. सो इट इंक्रीजेस द मैक्सिमम. सो जितने भी hypolipidemic drug देखे आपने, so out of that this nicotinic acid has a highest or it has a maximum ESDL increasing property. So this nicotinic acid has a highest ESDL increasing property amongst all hypolipidemic drug. It also decreases the lipoprotein A and fibrinogen. What is the use? It is useful in the patient of increased risk of coronary artery disease. एडवर्स रिएक्शन क्या है इसके? एडवर्स रिएक्शन, सो मेनली टू एडवर्स रिएक्शन. फर्स्ट वन इज अ इंपॉर्टेंट कौन से, बाकी नौशिया वोमिटिंग डायरिया वो तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो लिखते हो आप वो तो कॉमन रहता है, नौशिया वोमिटिंग डायरिया. क्योंकि आपको कुछ आए ना आए वो 3 एडवर्स इफेक्ट आपको याद रहते हैं, नौशिया वोमिटिंग डायरिया. मतलब इतने एडवर्स इफेक्ट इतनी बार लिख देते हो आप कि वो पढ़ के एग्जामिनर जो होता है पेपर चेक करने वाला उसको डायरिया हो जाता है, लेकिन आपका नौशिया वोमिटिंग डायरिया खत्म ही नहीं. सो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सो मेनली टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन. क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन, मतलब आपकी स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट कर दे, क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन. क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन एंड इफ देयर इज अ वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, क्यूटेनियस ब्लड वेसल, अगर आपके स्किन के नीचे वैसोडाइलेशन हो गया तो क्या होगा आपका? यू विल फील वार्म, मतलब आपको एक गर्मी महसूस होगी. सो क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन एंड फ्लशिंग, दैट इज द फ्लशिंग एंड प्लूराइटिस, आपके स्किन के ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन होगा. नाउ दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्पिरिन. इट आल्सो हैज अ हेपेटोटॉक्सिटी एंड जीआईटी टॉक्सिटी, हाइपर यूरेसिमिया. these are the adverse effect of nicotinic acid. Nicotinic acid है ना, this nicotinic acid और vitamin B3 act by inhibiting the lipolysis. ये क्या करेगा? लिपोलाइसिस को होने नहीं देगा. लिपोलाइसिस मतलब क्या? ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स. तो लिपोप्रोटीन का भी लाइसिस होता है. लिपोप्रोटीन का अगर लाइसिस हो गया तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल वहां से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा. मतलब कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन in the form of cholesterol esters. Cholesterol का molecule as it is नहीं रहता, it is found in the ester form, low density lipoprotein. Now this nicotinic acid prevent the lipolysis, hormone sensitive lipolysis. मतलब आपके बॉडी में है ना, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो गया, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपको लिपोलाइसिस भी बढ़ेगा, तो फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज होगा. So this nicotinic acid prevent the hormone sensitive lipolysis in the adipose tissue. कहाँ पे? जहाँ पे फैट स्टोर होते हैं उसमें. इट प्रिवेंट द लिपोलाइसिस इन द एडिपोज टिश्यू.
which is hormone sensitive lipolysis by inhibiting the adenylyl cyclase enzyme. Maximum, it has a maximum high density lipoprotein increasing property. ये एक याद रखो, एक टर्म याद रखो, it inhibit the lipolysis in the adipose tissue, as it is क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है। आया समझ में? लिपोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, तो ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, इट विल नॉट लेट देम ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड विच इज हार्मोन सेंसिटिव। हार्मोनल आपकी बॉडी का एक पूरा सिस्टम होता है कि हार्मोन कब लिपोलाइसिस होगा, कब क्या होगा, सब फिक्स है, वो लिपोलाइसिस नहीं होने देगा एंड इट विल प्रिवेंट द रिलीज ऑफ free cholesterol in the blood. Okay, you can see the mechanism of this nicotinic acid again. So increase the activity of enzyme lipoprotein lipase. So increase the hydrolysis of triglycerides, chylomicron and very low density lipoprotein. Now what will happen? Reduction of triglycerides in the chylomicron and VDLL. ये एक इसका है mechanism. It is a mechanism of your clofibrate and fabric acid derivative. ये फेब्रिक एसिड का ही मैकेनिज्म है, इट इज नॉट मैकेनिज्म ऑफ निकोटिनिक एसिड, ये प्रीवियस का है। सो इंक्रीज द लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी, इंक्रीज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन द chylomicrons, very low density lipoprotein. So reduction of triglycerides in the chylomicron and VLDL, lowering of triglyceride VDL in the concentration in the plasma. That is a mechanism of action of fibric acid derivative. Now next one is a mechanism of action of your nicotinic acid in the this flow diagram. So nicotinic acid का mechanism of action क्या है? Inhibit the lipolysis in the adipose tissue. क्या करेगा? Lipolysis को inhibit करेगा adipose tissue में. Hormone sensitive lipolysis by binding to a adenyl cyclase or by inhibiting the adenyl cyclase. Decreasing the circulation free fatty acids. मतलब अगर lipolysis अगर नहीं हुआ बॉडी में तो free fatty acids, cholesterol आपके blood में नहीं आएगा. So because of the prevention of lipolysis in the tissue, decreases the circulating free fatty acid, decreases the hepatic triglyceride synthesis and decreases the low density lipoprotein, which is desirable in case of atherosclerosis and hyperlipoproteinemia. Simple. Now newer drug, ये recently कुछ नए drugs आए मार्केट में, तो आते रहते, जैसे नए गाने आते रहते मार्केट में, अभी नया गाना है झुमका वाली पूरा, वैसे नए ड्रग आए मार्केट में। एवासीमिब, फर्स्ट ड्रग इज एवासीमिब. So it inhibit the one enzyme known as ACAT1. ACAT1 ये क्या करता है? ACAT1 को inhibit करता है. What is that ACAT1? ACAT1 is known as a acyl-CoA cholesterol acyl transferase 1. Acyl-CoA cholesterol acyl transferase 1. ये जो ड्रग है एवासीमिब, it inhibit the enzyme. कौन सा enzyme? There is a ACAT1. इसका नाम हम क्या है? acyl-CoA cholesterol acyl transferase. इसका कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसफर करता है. So it is a enzyme required for the esterification of cholesterol. Esterification of cholesterol. So cholesterol is found in the body in the LDL in the form of cholesterol esters. So esterification of cholesterol is prevented by this AV-CMIP, and that's why incorporation of cholesterol in the low density lipid. Torcetrapib and anacetrapib. Torcetrapib and anacetrapib inhibit the cholesterol ester triglyceride transport protein. ये कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है उसको इमिट करता है. दीज आर द टू अगेन न्यू ड्रग, टोर्सेट्रापिब एंड एनासेट्रापिब. कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट जो होता है प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ना, उसको इनहिबिट करता है एंड आल्सो इंक्रीजेस द एलडीएल लेवल. देन लास्ट ड्रग है आपका लुमिटापाइड. लुमिटापाइड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द microsomal triglyceride transport protein. तो microsomal triglyceride transport protein MTP is important for very low density protein synthesis and assembly and release in the liver. तो देखो ये लोमिटापाइड जो है वो क्या करता है, एक प्रोटीन को बाइंड करता है, दैट इज नोन एज MTP, माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है किसके लिए? For the assembling of very low density lipoprotein, for the synthesis of very low density lipoprotein and its release. So that is prevented by this lomita. You can we will see the summary of all drugs. जो पूरे drugs देखे उसका एक summary. Mechanism of action of pattern of lipid lowering effect of important hypolipidemic drugs. So पहला drug आता है, पहला कौन सा? HMG CoA Adrs.
reductase inhibitor. Hydroxymethyl glutaryl CoA reductase inhibitor. In that you have lovastatin 10 to 80 milligram dose होता है उसका. Simvastatin 5 to 40, atorvastatin 10 to 80, rosuvastatin. So what will they do? They will decrease the cholesterol synthesis by inhibiting the enzyme. Okay, so we'll see the summary of all these drugs. So HMG CoA reductase, they inhibit the synthesis of cholesterol by inhibiting the decreases the cholesterol synthesis by inhibiting the HMG CoA reductase inhibitor. They are known as HMG CoA reductase inhibitor. They decreases the cholesterol de novo synthesis of cholesterol by inhibiting the rate limiting step, that is HMG CoA reductase. Okay, lovastatin, simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, these are the drugs. Okay? तो ये क्या करते हैं लिपिड में, लिपिड लेवल में देखो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है उनका लेवल डिक्रीज करेंगे, लो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है उसका लेवल ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी डिक्रीज कर देंगे. सेकंड टाइप के ड्रग जो देखा है अपन ने बाइल एसिड, इन दैट यू हैव कोलेस्ट्रामाइन, कोलेस्टिपॉल, कोलेस्टिपेसम. So cholestyramine is used in the dose of 4 to 16 gram, cholestyramine 5 to 30 gram. All these drugs they decreases the bile acid absorption and increases the hepatic conversion of cholesterol ester, cholesterol bile acid. तो ये कोलेस्ट्रॉल का बाइल एसिड में कन्वर्जन इंक्रीज कर दे, बाइल ओके कोलेस्ट्रॉल का एब्सॉर्प्शन डिक्रीज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल प्रिवेंट द एब्सॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल and they will increase the hepatic conversion of cholesterol into bile acid. Also increases the LDL receptor on the hepatocyte. लिवर के ऊपर जो LDL receptor है उसको इंक्रीज करने के, ताकि लिवर क्या करेगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बुलाएगा और उसको मेटाबोलाइज करेगा. These drugs they will decrease the low density lipoprotein. It will increase the high density lipoprotein. Triglycerides are not much affected. May increase in the sometime. थर्ड कैटेगरी जो होता है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव और क्लोफिब्रेट एंड ऑल और फाइब्रेट्स. सो जेम फिब्रोजिल 1.2 और 1000 to 200 to 1000 milligram. Okay, then Bain's fibrate 600 milligram, phenofibrate 200 milligram. So what will they do? These fabric acid derivative they increases the lipoprotein lipase and decreases the fatty acid from adipose tissue. ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर देंगे बाय एक्टिवेटिंग द PPAR अल्फा, पैरोक्सिस्मल प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड अल्फा रिसेप्टर एंड इंक्रीजेस द लिपोप्रोटीन लाइपेज and that's why increases the metabolism of lipids and therefore decreases the free fatty acid present in the adipose tissue. So what is the effect on lipid level? They decreases the low density lipoprotein, increases the LDL when triglyceride is high, increases the high density lipoprotein, decreases the total triglycerides. Now last drug होता है आपका nicotinic acid. It is known as a lipolysis inhibitor. It inhibits the lipolysis in the adipose tissue. It decreases the production of your very low density lipoprotein. ये क्या करता है? It decreases the production of very low density. It decreases the lipolysis in the adipose tissue. That's why it is known as a lipolysis inhibitor. Nicotinic acid. Low density lipoprotein will be decreased, HDL will be increased, and triglycerides will also be decreased. So that is the overall summary of your drugs. A simple एक छोटा summary है. We have seen in the details. This was regarding today's session, and if you have any doubt